Those who are preparing for All India Bar examination, I hope all of you are aware of the fact that 4 to 5 case laws will be asked in your examination. So, case laws play a very vital role in your entire exam preparation. Hey everyone, my name is Sangeeta. Welcome back to this channel, Be Legally Aware. So, without any further delay, let's start today's session. Next one is our श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975। ये जो 1975 कब का था, जब नेशनल इमरजेंसी चल रहा था, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ओके, तो श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 में क्या हुआ, हेल्ड किया गया था कि राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज ए बेसिक फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स इन श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण 1975 में इट वाज हेल्ड दैट राइट टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the following of the landmark judgment of the Supreme Court it was held that right to free and fair election is the basic feature of our Indian Constitution, then your answer would be Srimati Indira Nehru Gandhi versus Raj Narayan, which is of 1975. So now moving to next landmark judgment of the Supreme Court. Okay, देखिए, next one is our ADM Jabalpur S. Shukla, which is of 1976. And the most important point to be noted here that this case ADM Jabalpur versus ADM Jabalpur versus S. Shukla 1976 is also known as habeas corpus case. This is very important case and you have and बहुत सारा एग्जाम में ये पूछा भी जाता है, ठीक है। तो which of the following is that means which of the following case is known as the habeas corpus case, then you have to answer that ADM Jabalpur versus S. Shukla, which is of 1976. Your correct answer would be ADM Jabalpur versus S. Shukla 1976. So in this case it was held that right to approach court under article 14, that is our fundamental right, article 21 and article 22 would remain suspended during the emergency. That means Jabalpur versus S. Shukla 1976 में यही हेल्ड किया गया था कि जब कभी नेशनल इमरजेंसी चलता है, दैट मीन्स नेशनल, ठीक है, दैट मीन्स इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 352 इट्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी and article 356 is about state emergency or we can say presidential rule, isn't it? So देखिए, अगर कोई भी एक इमरजेंसी चल रहा है, ठीक है, एज पर आर्टिकल 352 हो या आर्टिकल 356 में राइट टू अप्रोच कोर्ट अंडर आर्टिकल 14, 21 and 22 would remain suspended during the emergency, or an individual do not have the right to approach the court as per the article 14, 21 and 22 of our Indian Constitution. So this is all about ADM Jabalpur versus S. Shukla 1976, which is also known as habeas corpus case. Okay, so now moving to next landmark judgment of the Supreme Court. This is one of the most important case. Okay, देखिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो देखिए, बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का जो मेन फैक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डेथ पेनल्टी। जो इंडिया में जो डेथ पेनल्टी होता है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी किया गया था, ठीक। इन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में the Supreme Court in India that examined the constitutional validity of death penalty. ओके, तो इधर नॉर्मली क्या बोला है, देखिए, नॉर्मली बोला गया था कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मर्डर, अगर कोई भी एक पर्सन किसी एक पर्सन को मर्डर करता है, ठीक है, देन द पनिशमेंट इज सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो अगर आप लोगों ने आईपीसी पढ़ा होगा तो आप लोगों को शायद पता ही है, नॉर्मली अगर कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन को मर्डर करता है, देन इन दिस केस द पनिशमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सो नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अबाउट 14 years, okay, not more than 14 years. Okay, so देखिए, normally the punishment for offense
of murder is a sentence of life imprisonment. In certain cases, the court can depart from the rule and impose death penalty. तो इधर क्या बोला है? सो इन दिस केस जहाँ पर डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट दिया गया है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बट इन सर्टेन केसेस होगा, इन सर्टेन केसेस द कोर्ट कैन इम्पोज डेथ पेनल्टी. ओके, सो इन दिस केस क्या होगा? एक स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा, स्पेशल रीजन फॉर डूइंग सो, एंड सच रीजन्स मस्ट बी इन राइटिंग. दैट मीन्स बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन किया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन किया था, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980. ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. देखिए, नेक्स्ट वन इज अवर मच्छी सिंह. देखिए, नेक्स्ट वन इज अवर मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983, विच इज ऑफ 1983. ओके, देखिए उसमें केस में क्या हेल्ड किया गया था. देखिए, this is a landmark judgment in IPC about the application of death penalty. Okay, and the most important thing is the rarest of the rare doctrine. The Supreme Court outlined certain factors that determine whether a case should be considered as rarest of rare cases. That means देखिए, मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1983 में ये मेन क्या है? देखिए, मेन उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में बोला है. रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के बारे में बोला गया है. डेथ पेनल्टी तभी दे सकता है, दैट मीन्स डेथ पेनल्टी तभी इम्पोज किया जा सकता है जब if the case falls under the rarest of the rare cases. So this was held under Machhi Singh versus State of Punjab. Okay, so Machhi Singh versus State of Punjab 1983 is all about rarest of rare case where death penalty can be imposed. Okay, so now moving to next important landmark judgment of Supreme Court is that Navtej Singh Johar versus Union of India, writ petition criminal number 76 of 2016. So ये आप लोगों का केस साइटेशन आप लोगों को नहीं चाहिए. सो दिस केस इज ऑल अबाउट decriminalizing gay sex under section 377 of the IPC. That means नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में 377 था हम लोग का IPC का, ठीक है. उसमें गे सेक्स को डिक्रिमिनलाइज किया गया था. दैट मीन्स पहले क्या था? पहले IPC में ये ऑफेंस था, लेकिन आफ्टर द केस ऑफ नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, now it is no longer an offense as per the provision of section 377 of the Indian Penal Code. Okay, this case decriminalized homosexuality, striking down the 158-year-old law which deemed gay sex against the law of the nature. तो पहले में क्या होता था? gay sex ये it was a kind of offense जिसके लिए पनिशमेंट दिया गया था, लेकिन आफ्टर दैट नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज नाउ नो लॉन्गर एन ऑफेंस एज पर द प्रोविजन ऑफ IPC. However, क्या बोला? देखिए, other parts of section 377 related to sex with minors and bestiality remain in force. That means देखिए, जो section 377 of IPC का, ठीक है, एक सम पोर्शन, दैट मीन्स यू कैन से हाफ पोर्शन को उन लोगों ने स्ट्राइक डाउन किया गया था. दैट मीन्स हाफ पोर्शन को स्ट्राइक डाउन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट इन नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर मेंशन किया गया था अबाउट गे सेक्स. बट अदर जो पार्ट्स है विच इज रिलेटिंग टू माइनर्स एंड बेस्टिलिटी रिमेन इन फोर्स. बाकी जो दूसरा पार्ट है सेक्शन 377 का विच इज ऑल अबाउट, ये स्टिल इन फोर्स है. ओके, ये स्टिल इन फोर्स है. सो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द डिक्रिमिनलाइजिंग gay sex, then your answer would be Navtej Singh Johar versus Union of India, which is of 2016. Okay, so now moving to next landmark judgment of the Supreme Court. देखिए, next one is our Justice K.S. Puttaswamy versus Union of India, writ petition civil number 494 of 2012. देखिए, ये सब जो मैं केस का जो साइटेशन पढ़ रही हूँ आप लोगों को चाहिए नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जो केस का नाम याद रखना है, ठीक है. जस्टिस K.S. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
ठीक है, which is of 2012. In this case it was held that declaring the right to privacy as a fundamental right. So के बारे में जो बोला है, right to privacy as a fundamental right, which is regarded as Article 21. आर्टिकल 21, ठीक है। सो जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही हेल्ड किया गया था कि द राइट टू प्राइवेसी, ओके, राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, ओके, राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट। तो अभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन में ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डील्स विद द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, देन योर आंसर वुड बी जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट लैंडमार्क जजमेंट। देखिए, नेक्स्ट वन इज जोसेफ शिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। वेरी इंपॉर्टेंट केस है आप लोगों का। उसमें क्या क्या गया था, देखिए, उसमें द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन एडल्ट्री एज ए ऑफेंस। ओके, जो आईपीसी में सेक्शन देखना, सेक्शन 497 था, आईपीसी सेक्शन 497 विच इज ऑल अबाउट एडल्ट्री, ठीक है, एडल्ट्री विच वॉज ऑल अबाउट एडल्ट्री। बट जोसेफ शिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में क्या हेल्ड किया गया था, आईपीसी का जो सेक्शन 497 को डाउन कर दिया गया था, ठीक है। इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी एज डिस्क्रिमिनेटरी, ओके, एंड आर्बिट्ररी। And in this judgment, Chief Justice of India Deepak Mishra and highlighted that adultery can be a ground for divorce but not a criminal offense. That means ये जो पहले जो section 497 of IPC which is of adultery पहले क्या था, it was a criminal offense, okay, पहले ये criminal offense था, okay, but now it is not a criminal offense. Now it will be a ground for divorce. Now it will be a ground for divorce. For divorce in India. ओके, जोसेफ शिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में यही हेड किया गया था कि adultery is no longer a criminal offense. Now it will be a ground for divorce. So this is very important case law for your AIB exam preparation. Okay, so now moving to next landmark judgment of the Supreme Court. देखिए, next one is our Indian Young Lawyers Association versus State of Kerala writ petition civil number 373 of 2006. Okay, इसमें क्या हेल्ड किया गया था, देखिए, this verdict allowed the entry of women of all ages in the Sabrimala temple. ओके, ये तो आप लोगों को पता ही है शायद। देखिए, सबरीमला टेम्पल में पहले क्या होता था, वुमेन ऑफ एक सर्टेन एजेस उन लोगों को एंट्री करने का परमिशन नहीं था। आफ्टर दिस केस इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वर्डिक्ट अलाउड द एंट्री ऑफ वुमेन ऑफ ऑल एजेस इन द सबरीमला टेम्पल। सो वेरी इंपॉर्टेंट केस फॉर योर AIB प्रिपरेशन। ओके, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट। देखिए, नेक्स्ट वन इज अवर Shyam Narain Chouksey versus Union of India writ petition civil 855 of 2016. देखिए, this is very important, interesting case law. In this case, it was held that national anthem not mandatory in cinemas hall. That means देखिए, interim order पहले एक पास किया गया था इसमें, जहाँ पर it was made mandatory for cinema halls to play national anthem. But later on, it was held that from now it will not be mandatory for cinema halls to play national anthem. On Narain Chouksey versus Union of India, it was held that now national anthem not mandatory in cinema halls. So this is very important case for AIB preparation. Okay, so now moving to next landmark judgment of the Supreme Court. Next case is our DK Basu versus State of West Bengal 1997, which is very important question. So in this case, it was held that guidelines to be followed in all cases of arrest or detention. The person arrested must be made aware of his right to have someone informed of his arrest or detention as soon as he is put under arrest or detained or is detained. Okay, that means कुछ guidelines दिया गया था regarding the arrest. Guidelines दिया गया था regarding arrest. That means at the time of arresting a person, that
arrested person must be made aware of his right to have someone informed. Okay, someone informed of his arrest and detention as soon as he is put under arrest or is detained. That means अगर कोई एक person को arrest किया जाता है, then at that time that person होना चाहिए कि he has the right to have someone informed. That means उसको एक right है कि उस person को ये पता होना चाहिए कि that person has the right कि कोई एक उसका जान पहचान को बोले कि उसका अरेस्ट और डिटेंशन हुआ है एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट, कि उसको कोई भी एक दूसरे पर्सन को वो इन्फॉर्म कर सकता है. ओके, राइट टू इन्फॉर्म टू समवन. दिस सो डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1977 इट्स ऑल अबाउट अरेस्ट गाइडलाइंस. अरेस्ट guidelines. Okay, so now moving to next landmark judgment, and this is the last judgment. Next one is Shayara Bano versus Union of India, which is of 2017. Okay, this case confined to the topic called triple talaq. Okay, Shayara Bano's case led to the ban of Muslim practice triple talaq. That means Shayara Bano versus Union of India, which is of 2017, is all about triple talaq. दैट मीन्स इस केस में जो ट्रिपल तलाक का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन किया गया था एंड उसके बाद उसको बैन किया गया था. जो किसको बैन किया गया था? ट्रिपल तलाक को इंडिया में बैन किया गया था. ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक केस. एंड आफ्टर दिस केस it was so after this case it had led to the ban of Muslim practice of triple talaq. That means which is also known as talaq e biddat. Okay, so अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि which of the following case of the Supreme Court relates to the triple talaq or talaq e biddat, then your answer would be Shayara Bano versus Union of India 2017. So this is for all today. If you like this lecture, please like this video and please don't forget to subscribe this channel in the next video.